Hello everyone, welcome to Edubolt. Today I will be discussing about history preparations, that why history is important and especially why should we choose history as optional in the UPSC examinations. Do you know history plays a very important role? So first of all, let us understand that what is the approach behind choosing history as an optional subject that will be helping you throughout the journey in the civil service examinations. So the first important point that I would like to tell you, that is especially very important for the history as an optional subject, that we have a ample study materials. You will be surprised to know that especially for if I talk about the history, if I talk about the history papers, there may be the thousands of studies material are available, especially from the history. But the point is we have the selected also. So if you read especially the 10 most important books that is available in the market and which are available in the soft copy and the hard copy also. So we have a ample study material, but we have a targeted study material. And if you read about these 10 books, you will be able to prepare your history optional examination. So this is the most important approach behind the choosing history as a optional subject. Now the second point is that there had been a direct questions have been asked in the examination. I have been teaching the history optional at a Plutus IAS in the past, and we have experienced that many of my students were able to deal at least more than 90 to 95% questions directly asked in the examination from the previous years. So if you solve 30 years question on the basis of the study material that you will have, the questions will be direct in the examination, and some 10% or 5% that is not direct, still you will be able to solve those questions. So we have a direct questions have been asked. This is the most important point, especially if you can see in the history preparations. Apart from it, we have overlapping with the GS papers. Especially this is the history optional is going to help you not only in the optional, in the mains exam. If I talk about the mains exam, you know that in the mains exam we have 4 paper and a GS paper. So especially in the GS paper 1, at least the 25% to 30% weightage of the GS paper 1 is from the history. Apart from it, in the prelims, if you talk about the prelims examination, do you know, student, in the prelims exam also about 15 to 20 questions have been there from the history. So we have a overlapping with the other GS paper. That is the other point we can know, especially in this preparation. Now the fourth important, it is a most important for the prelims. It is not only 15 to 20 questions have been asked from the history, but the point is there are some indirect questions have been asked from political science, Indian society, economics. Then we have the international relations, where world history play very important role. So we have a important for the prelims. Apart from it, it is a very scoring subject. If you prepare very nicely the mapping part, ancient, medieval, modern, world history, everything that we will discuss today, this is a very scoring subject. Students are getting very easily 60 to 65%, especially in this exam, if you prepare very nicely, along with your writing skills should be improved. That is the main point. Now the point that what is a cons in the history preparation. कॉन्स क्या है? तो सबसे पहला चीज़ है इंटरप्रेटिव नेचर है यहाँ पे. सो नेचर ऑफ दिस वन, नेचर ऑफ द हिस्ट्री सब्जेक्ट इज मोस्टली इंटरप्रेटिव. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी है वास्ट सिलेबस. The syllabus is very vast, from the ancient to modern to the post-independent to the medieval to the we have world history, we have more than 50 chapters are there. 50 से ज़्यादा chapters हैं. But the point, and today we will discuss all those important chapters. But the point is that the syllabus is vast, But the third important will be the writing skills. You need a writing skills. But let me tell you, if you are able to cover this syllabus within 6 months, अगर आप 6 महीने की अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी 2 आवर सेल्फ स्टडी. अगर आप 2 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ले, और यू कैन ऐड ऑन इफ यू डू अ कोचिंग एंड कोचिंग प्लस 1 hour self study, 1 hour self study, then your syllabus would be completed. आपकी syllabus आराम से complete हो सकती है. Now the point is, see, everyone has a
skills. If you go to other GS paper also, in the GS paper 4, GS paper 3, the point is you need interpretive skills, and this will help you in the services also when you join IAS, IPS and all. So if you have a command of a writing skills that is very required for UPSC civil service examination, then this is a benefit. So the point is that try to convert your cons into the pros. This is what we know. So we have seen that why history is important and ideal subject for the history optional, है ना, why it is history optional is ideal subject for the civil services aspirant throughout the years. Okay, but the point is generally there are very few people who are from not history background, they choose history as an optional subject. This is true, but the point is those who have done their graduations and a masters and those who want to go for civil service examination, it is recommended that you should take and continue with your history optional subject, because I have my many students from the science background and from one few of your students is from the philosophy, anthropology and then English honors also who have chosen history as an optional. Okay, so don't worry, history will be a very important. Now let us discuss that how many branches we divide especially in the history. So when we talk about paper 1 has ancient plus medieval India, and along with that will be the art and culture, है ना. So paper 1 will have history plus ancient plus medieval India. Then we will have paper 2 from modern history, post independent and world history, है ना. आपको पता है that there are total 8 questions are asked, है ना. There are total 8 questions are asked in the examination, especially from paper 1 also, and same thing will be in the paper 2 also. Here will be also the 8 questions will be asked in the examinations. Okay, out of these total 8 questions, okay, there will be the part 1 and part 2. There will be the part 1 in the paper, and the second types of paper will be the part 2. You know that part 1 had especially how many questions? They have total 4 questions, and part 2 will also have 4 questions. अब क्या है, इन दोनों में से, है ना, आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी कंपलसरी, है ना. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 विल बी कंपलसरी. देयर आफ्टर व्हाट हैपेंस, वी हैव टू डू 1 more क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एंड देन 1 more क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, और फिर इन दोनों में से किसी एक में से आपको एक और करने. सो टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू डू स्टूडेंट इन दी पेपर 1? पेपर 1 में टोटल आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? 5 क्वेश्चंस, और टोटल मिला के इस 5 क्वेश्चंस में से तकरीबन आपको 19 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना. दैट विल बी इक्वली फ्रॉम द एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, फ्रॉम मॉडर्न इंडिया टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट टू द वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल दैट विच टाइप ऑफ divisions are there and how many type of chapters are there. Let me tell you the chapter that I am going to discuss with you, especially the part of the syllabus. This is a chapter that is redefined according to the student perspective and the notes and the content and chapters available in the market. Okay, I have tried to integrate many of the important sections of the UPSC syllabus into the chapter. तो ये चैप्टर और यूपीएससी सिलेबस में अंतर होगा, पर जो भी यूपीएससी सिलेबस में चीज़ें हैं दैट वुड बी अवेलेबल इन दिस discussions in the particular chapter. Okay, so now let us discuss in detail that what are the syllabus of ancient India first. So ancient India की जैसे हम बात कर ले तो ancient India में आपको पता होगा, in the ancient India the first important chapter we have the sources of ancient Indian history, है ना. I will be briefly discussing this topic. Okay, then second topic आपका है प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट डील्स विद द स्टोन एज, चैल्कोलिथिक, है ना, मेगालिथिक, है ना, ये सब टॉपिक इस पर बात करते हैं. थर्ड चैप्टर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इन द चैप्टर यू स्टडी व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन, व्हाट इज द फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन, व्हाट इज द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, है ना, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है. देन वी हैव वैदिक पीरियड, डिफरेंसेज बिटवीन अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक, स्पेशली इन द सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड दीज एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस have been asked on this topic. Then we have महाजनपद era and the rise of the मगध, ये भी important topic है जो आपको पूछी जाती है एग्जाम में. Then we have Buddhism and Jainism is another important topic that will help you to understand here. Now we will have the modern empire.
Mauryan Empire, especially the rise of the Chandragupta Maurya. Then we have Ashoka, his administrative policy. Then we have his Dhamma policy, his foreign policy, his economic policy, है ना, similar type of questions. And then finally the decline of the Mauryan Empire questions have been asked. Then we have post-modern period, है ना. Post-modern period में you know that there are the Indo-Greeks are coming, the Sungas are there, Satavahanas are there, है ना. Indo-Greek में we have the Sakyas, then we have Kusan, and then we have local kingdoms also. So these all kingdoms we have to see. Then 9th chapter will be Sangram age, the South India and the Chela Pandya and the Chola and the Sangram literature. Then we have the Gupta period. फिर इसी में वक़्त आएंगे. एंड देन वी हैव द पोस्ट गुप्ता पीरियड दैट कवर्स हर्षवर्धन, शशांक, है ना, चालुक्याज, पल्लवाज एंड ऑल. दीज टॉपिक्स आर डिस्कस हेयर. एंड देन लास्ट चैप्टर्स विल बी द कल्चरल थीम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. कल्चरल थीम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थीम्स आपको हो गया पेपर 1 के एंशिएंट इंडिया के. नाउ लेट अस डिस्कस दी पेपर 2, दैट इज स्पेशली दी पेपर 1. पेपर 2 का पार्ट 2 जो है दैट इज अ मिडिवल इंडिया. So in the medieval India, the first important theme we have early medieval India. The early medieval India will especially cover with you the themes of feudalism debate, the social structure, origin of Rajputs, then Chola, Dark Age, है ना. ये सब important themes आपको पढ़नी होती है. Turkish invasion में how the Turkish peoples are coming, the first Sindhi invasion, then Ghaznavid invasion, then Gauri invasion. These all topics are discussed there. The questions have been asked from this topic in the exam. Then we have Delhi Sultanate. In Delhi Sultanate, है ना, the formations of Delhi Sultanate, the political dynasties, है ना, from the Slave to the Khilji to the Tughlaq to the Sayyid to the Lodi. Then we have their political institutions, iqtidari system, economic classes, है ना, trade and commerce, है ना. These all questions. And then cultural development also. These are the important topic had been asked in the exam. Thereafter we have the regional kingdoms in medieval India. रीजनल किंगडम्स मिडिवल इंडिया में आ जाएंगे, है ना. इसमें आपको पढ़ना होगा विजयनगर, बहमनी, गुजरात, मालवा, उड़ीसा, असम, गजपति. दीज ऑल किंगडम्स आर देयर इन दी. देन वी हैव राजपूत किंगडम्स आर ऑल्सो देयर. सो रीजनल किंगडम्स. देन द 5th चैप्टर विल बी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. यू नो दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. देयर आफ्टर वी हैव द मुगल एम्पायर. So Mughal Empire में from the beginning with the Babur, then we have Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb, and then his successors. In this chapter is most important. The questions have been asked: the political foundation, their Rajput relation, their religious policy, है ना, their military policy, जमींदारी, the जागीरदारी system, मनसबदारी systems, है ना, their foreign relations, their home kingdom struggle, Jat, Sikh, the Sikh Guru. These all topics have been asked in the examination from the Mughal period. Okay. Thereafter we have the Maratha. ये हमारा टोटल 7 चैप्टर्स है. इन 7 चैप्टर्स में से एक और जो एडिशंस होते हैं पेपर 1 में, the one additions that is there in the paper 2, the questions will be there in the mapping. Okay. So in the mapping part in the examination as we have discussed with you, जैसे मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, जो पेपर 1 के है ना, in the paper 1 you know how many questions are there in the paper 1? there are total 8 questions are there, right? So total 8 questions में से जो पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, that is related to mapping. And here there will be this 20 sites will be given. How many sites? 20 sites will be given. और इसी 20 sites में से आपको हर sites को आइडेंटिफाई करना है. We have to identify all the sites. और आइडेंटिफाई के बाद उसमें हमें 30 वर्ड का एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है अबाउट द पार्टिकुलर साइट्स. ये भी कोई टफ नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ लिए. और मेरा एक मैपिंग की बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, और यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माई वेबसाइट ऑल्सो. That will further help you to understand and solve these questions. Now let us discuss the paper 2. और पेपर 2 से पहले कल्चरल थीम्स भी रहेगा मिडिवल इंडिया का, जो आप देख सकते हो. सो पेपर 2 में आपको पता है 2 डिविजन्स है, बेसिकली 3 शॉर्ट डिवीजन बोल सकते हैं. मॉडर्न इंडिया इंक्लूडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंट, एंड देन वी विल हैव द वर्ल्ड हिस्ट्री. सो लेट अस डिस्कस द मॉडर्न इंडिया. सो मॉडर्न इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो आपको मिलेंगे वो है 18th सेंचुरी डिबेट, डार्क एज, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स and the rise of the British power in India. ये chapters 1 रहेगा. Regional kingdoms also, formation of regional kingdom, like there are, you know that there are 3 types of regional kingdoms are there in this time. एक regional kingdom था रेबल स्टेट, जिसमें मराठा, जट्स वगैरह आते हैं. Then second state was a successor state. Okay. Then we have the third state that we have. These are the independent state.
three types of states had been developed by this time, so we can mention about that. Now the next point will be the rise and the consolidation of the British Empire in India, है ना. Especially they had captured Bengal initially, then Mysore, then Maratha, then we have Sindh, then we have Myanmar, right? Then we have Afghanistan issues, है ना. Then doctrine of lapse. Before that we have the Sikh Empire. So how the especially the empire become very powerful, and what were their different policies like subsidy alliance system, doctrine of lapse, है ना. These all systems had been discussed in chapter 3. तो chapter 3 बहुत important interesting topic है. Then chapter 4 is related to, I have combined 3 to 4 important theme within the chapter. This talks about the tools of the British administration area. किस तरह से वो इंडिया पे रूल कर रहे थे. द रेवेन्यू सेटलमेंट, देयर इकोनॉमिक पॉलिसी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फार्माइन, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी, ये सारे चीज़ जो है. इसके साथ साथ देयर रिफॉर्म्स, एजुकेशन सिस्टम्स, पॉलिटिकल काउंसिलेशंस. तो ये सारे जितने भी टूल्स हैं जिससे वो रूल कर रहे थे इंडिया पे, दिस ऑल सिस्टम्स आर टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर 4. Then 5 is about the socio-religious reform movements and legislations. In this chapter, you have been assessed, especially with the rise of the Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar. Then we have Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati. Then we have Jyotiba Phule. So these are the important topic. Then we have caste issue में we have नारायण गुरु, है ना. Then we have the स्वामी अय्यर, भीमराव अम्बेडकर, ये सब important topic है. Then we have the सिंध सभा movement, अकाली दल. Then we have सर सैयद अहमद खान. ये सब important themes है. That is a part of the socio-religious reform movement in India. It is also, this topic is also called as Indian Renaissance. So similar type of questions have been there in the exam. Then we have revolt में the peasant revolts, ट्रैवल रिवॉल्ट्स है. देन वी हैव इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, है ना. इससे पहले आपको रिवॉल्ट्स में सबसे चीज़ में इन द रिवॉल्ट यू हैव अ डिस्कशन ऑफ द टॉपिक, स्पेशली इफ यू रिमेंबर 1857 रिवॉल्ट भी इसमें आएगा. देन वी हैव द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, इंडियन इमरजेंस. सो इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हो रहा है, फिर मास नेशनलिज्म आ रही है, गांधी जी कमिंग टू इंडिया. तो इससे पहले इमरजेंस में पढ़ना है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीलिंग दैट केम टू इंडियंस दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, मॉडरेट पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ है. देन वी हैव एरा ऑफ मास नेशनलिज्म इसमें है. इसके साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है आपकी. देन अदर स्टैंड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म टॉपिक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, पिजन मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, है ना. देयर आफ्टर वी हैव द टॉपिक लाइक द राइट विंग, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, ओके. देन वी हैव द कास्ट पॉलिटिक्स, है ना. तो जितने भी टॉपिक है दैट इज नॉट डिस्कस इन चैप्टर 9, चैप्टर 10, दैट वुड बी डिस्कस स्पेशली इन द चैप्टर 9, है ना. देन चैप्टर 10 इज अ इंडिपेंडेंस और पार्टीशन. इंडिपेंडेंस और पार्टीशन कैसे हो रही है ना. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया from the 1937 to the 1937 to 1947. For example, 1937 election, World War II, August offer, Quit India movement, Cripps mission before that. Then we have Simla conference, cabinet mission. Then we have finally the Mountbatten plan. इसी बीच में कम्युनलिज्म बिल भी आए. सो ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स है. फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ चलते हैं, जो है कंसोलिडेशन ऑफ द इंडियन स्टेट. So consolidation of the Indian nation में the making of Indian constitution, integration of princely state, tribal integration, language issues, these are the important topic are being discussed here. Thereafter we will have the caste and ethnicity after independence, है ना. तो caste issue क्या था, tribal issue क्या था, है ना, caste reforms क्या हुए हैं, रिजर्वेशंस वगैरह वगैरह पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. Then we have economic development and political change, ये important topic है. So economic happens in India and the questions are related to the especially till the time of Nehru. So Nehru तक questions रहते हैं and some questions are related to environment. Otherwise questions are not asked generally from these themes. Now we will discuss the world history. So in the world history there are total 10 chapters we have seen. The chapter 1 will be the pre-modern world and enlightenment. This will start from the decline of feudalism, Renaissance, middle class, scientific revolution, discoveries of the voyages. Then we have enlightenment, reformations before that, and then finally the ideology like Adam Smith capitalism theory and Karl Marx Marxism theory. ये सब important topic है that is especially asked in the individually questions are asked from the these topic. Then we have the origin of the modern world politics.
इन द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स यू हैव फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना होगा है ना, लेट मी सी दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू विल हैव टू सी। तो पहला टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशंस। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद है ना जो दूसरे थीम्स आएंगे आपको वो रहेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशंस। सो यू विल हैव द अमेरिकन रेवोल्यूशंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकन सिविल वार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आफ्टर थर्ड टॉपिक विल बी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। डू यू नो दिस थ्री टॉपिक दैट इज अ French Revolution, American Revolution and Industrial Revolution of the 18th century are the foundation of the modern world politics। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपके पास है नेशन स्टेट सिस्टम that the state like Greece got independence from Ottomans, then we have unification of Italy, Germany, what is nationalism, these all the topic had been asked in the exam। then we have colonialism and imperialism। colonialism क्या होता है, imperialism क्या होता है, who are the colonial power especially from the Europe। from the beginning we have Spain, then we have Portuguese, then we have Dutch, Danish, French, English, then later on we have German and then Italians। और बाद में चलते 20th century में we have the USA initially for first some reason and then we have Japan also। फिर पूरी वर्ल्ड कैसे कॉलोनाइज हुआ, स्टार्टिंग विद दी लैटिन अमेरिका, एशिया एंड देन वी हैव अफ्रीका। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी से रिलेटेड चैप्टर 10 भी हम देखेंगे, ठीक है। देन चैप्टर 6 विल बी दी रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशंस। इन दिस चैप्टर स्पेशली यू हैव टू डिस्कस that what is revolutions of 1830, 1848, चाइनीज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशंस, ये सब चीज़ें पढ़नी है। और काउंटर में समथिंग दैट हैपन अगेंस्ट रेवोल्यूशंस, फॉर एग्जांपल फासिज्म, नाजिज्म, फासिज्म इन इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान, पोर्टुगीज, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर 6 में पढ़नी है। चैप्टर 7 विल बी दी वर्ल्ड वार्स, दो वार, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 एंड द पीरियड बिटवीन World War 1 and World War 2 are discussed in this chapter। So many questions happen in exam from the topic। Then we have the world after world wars। तो वर्ल्ड वार के बाद दुनिया क्या था, फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कोल्ड वार, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर 8 में पढ़नी होती है। चैप्टर 9 में इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, द राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, है ना, अमेरिका कैसे पावरफुल हो रहा है। चैप्टर 10 विल बी द अपोनेंट टू द चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या था, colonialism and imperialism। now the chapter 10 will be the decolonizations। पूरी दुनिया कैसे डीकोलोनाइज हुई, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ी है। so decolonizations of the whole world under the pressure of UNO, the super power that is USA and USSR, और पूरी दुनिया में लैटिन अमेरिका, then we have the Africa, then we have Southeast Asia, India and then we have Arab nations। so these all themes are to be discussed। तो ये टोटल आपकी सिलेबस थी हिस्ट्री ऑप्शनल की पेपर 1 और पेपर 2 की। नाउ लेट अस हैव अ डिस्कशन दी बुक लिस्ट, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और कौन कौन से ट्रेनिंग। मैंने बोला कि हज़ारों किताबें हैं इन दी बिगिनिंग, आई टोल्ड यू दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर देयर, बट हियर आई विल बी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट यू कैन रिफर फॉर दिस सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी आराम से करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर एग्जाम। अदरवाइज यू विल बी रिलाई ऑन सम कोचिंग ऑल्सो, like myself also I will provide you some guidance if you join with us with the Edubolt and with me through the website। so सबसे इम्पोर्टेंट बुक आपके लिए है पेपर 1 में एंसेंट इंडिया का RS शर्मा। so राम शरण शर्मा की बुक है इंडिया एंसेंट पास्ट। दिस इज द नंबर 1 बुक, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, द someone should go and refer this book। okay, now the second important book we have medieval India की सतीश चंद्रा की बुक है हिस्ट्री ऑफ medieval India। so this book is written by Satish Chandra। then third important book we have history of modern India by Bipin Chandra। ये 3 किताब तो बेसिक बुक है that everyone should read। no, I mean to say no chance without reading this book। ये तो बेसिक बुक है जो एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, 2 बार भी पढ़ना पड़ेगा। then स्टैंडर्ड बुक में की बात करें, इन द स्टैंडर्ड बुक द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपिंदर सिंह। दिस विल बी योर फर्दर आइडियल बुक। उपिंदर सिंह की जो बुक है ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक है दैट विल हेल्प यू टू कवर अप दिस वन।
देन वी हैव मॉडर्न इंडिया के लिए प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। दिस विल बी द अदर इम्पोर्टेंट बुक। देन वी हैव द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हैं क्या पढ़ना है आपको। और पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए आपको है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड अदर हिस्टोरियंस। इसके साथ साथ वी हैव दी एल वासम, इसको लोग बोलते हैं एंशिएंट के लिए पढ़ने के लिए। तो अगर किसी को आपको कल्चरल हिस्ट्री में अच्छी चीज़ करनी है तो एल वासम की बुक है, दैट यू कैन रिफर दिस बुक, दैट इज अ वंडर दैट वाज इंडिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इवन द यूपीएससी रिकमेंड द एस्पायरेंट टू गो थ्रू दिस बुक। अपार्ट फ्रॉम दिस बुक वी हैव द अदर स्टडी मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉ। वर्ल्ड हिस्ट्री की मेरी एक नोट्स भी है ना। अगर आप नोट्स देखो, जो मेरा नोट्स है डॉक्टर जितेंद्र कुमार की नोट्स है, ओके नोट्स, दैट इज द वन ऑफ द गुड मटेरियल इन द मार्केट। इवन यू कैन रिलाई ऑन माई नोट्स ओनली फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री। वैसे नोट्स तो मेरे सारे से बेस्ट का है, बट आपको नोट्स के साथ साथ पीपीटीज वगैरह रेफर करनी पड़ेगी, देन यू विल एबल टू कंप्लीट इट। But if you go through my notes that is available on the Google, any website, you go to my website, you will find these details. Then we have the history of modern India, that is Rajiv Bahir Spectrum is a book है. This book is of the Spectrum, okay. तो पहले जो मैंने आपको बताया था स्पेशली द बिपिन चंद्रा एंड देन वी हैव दी नेक्स्ट अदर बुक बस शेखर बंदोपाध्याय। यू कैन रिलाई ऑन वन बुक, इधर ऑन बिपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय और स्पेक्ट्रम, तीनों में से एक भी पढ़े बिपिन चंद्रा के साथ साथ, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। देन फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया वी हैव द इंडिया आफ्टर गांधी रिटन बाय रामचंद्र गुहा, बट दिस इज अ वेरी लेंथी बुक फॉर द ऑप्शनल, है ना। क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड टिल नेहरू ओनली, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं चाहे तो। देन एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनसीईआरटी यू विल बी नॉट एबल टू कवर दिस पॉइंट्स। सो एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 एक्सेप्ट क्लास 11, आप चाहे तो क्लास 11 के एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, है ना। यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट विल फर्दर हेल्प यू टू एड अप दिस थिंग्स। तो हमने क्या पढ़ा अभी, वी हैव सीन दी सिलेबस, आपको क्या करना है, स्टार्ट कैसे करनी है वो भी हम देख सकते हैं। तो पहले हम एक PYQ देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट इंडियंस ऑफ द एंशिएंट पीरियड इंडल्ज ओनली इन द मेटाफिजिकल थिंग्स नॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्योर साइंस। इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स डालेंगे, क्योंकि द हिस्टोरियंस लाइक जेम्स मिल, ओके, देन वी हैव V.A. स्मिथ, है ना, had given this argument. But the point is that no, we have examples of pure science in the ancient time. For example, mathematics, we have Aryabhat, Brahmihir, Buddhyan, Brahmagupta, Bhaskaracharya 1 and 2. In the medicine, we have Charak, we have Sushrut, Dhanvantri. Then we had a knowledge of chemistry also, याद है, Ras Ratnatar is a book written by Nagarjun. Then we have metallurgy. तो साइंस एंड टेक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, कैलेंडर्स हमारे पास थी, लूडो बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। तो साइंस एंड, तो वी विल बी सेइंग दैट ऑप्शन इज फॉल्स, ये फॉल्स है। और इसको हम वी विल गिव द एग्जांपल्स दैट हाउ स्पेशली एंशिएंट इंडिया हैड दिस साइंस एंड टेक। सो द स्टेटमेंट है जेम्स मिल V.A. स्मिथ का, especially about the ancient India had been a very barbarian, uncivilized, will be the false statement, and we will answer this question with the example. Next question है, discuss the scientific and technological development in ancient India. Similar questions आ रही है एग्जाम में, है ना। तो साइंस एंड टेक कौन कौन सा पार्ट है। देन वी हैव द, मैंने बस आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ साइंस एंड टेक ओनली, ओके। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, आई हैव टेकन जस्ट 4 एग्जाम्पल। ट्रेस द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया अप टू 750 AD। तीनों क्वेश्चन सिमिलर ही है। क्वेश्चन 4, एग्जामिन द प्रोफिशिएंसी ऑफ द एंशिएंट इंडियंस इन वेरियस क्राफ्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। देख लीजिए, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन 2024 तक पूछे गए, एंड यू विल बी एबल टू सरप्राइज टू आंसर दिस ऑल पॉइंट्स। नाउ द पॉइंट इज दैट हाउ टू कनेक्ट विद मी इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस वन। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसी तरह से कोई भी मेंटरशिप चाहिए, कोई भी डाउट है, सो यू वुड बी
very easily access me through especially the Edubolt. तो ज्वाइन मी एट Edubolt है ना, एंड Edubolt पे ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हेल्पफुल मिल सकती है। अब Edubolt पे कहाँ जाना है, ये है www.edubolt.in which has its own applications also। आप गूगल पे प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड थ्रू दे यू विल बी एबल टू ज्वाइन विद मी विद एट Edubolt। What will you get here? You will have a personal mentorship for 1 hour, half an hour, what you demand as per the very required minimum fees. We will have a personalized test series and in-depth doubt resolutions also. Any doubt you have, if you want to prepare at home, or if you have prepared at any institute and you think that your history optional syllabus is not completed, you are having problem in answering the questions, you are unable to attempt these questions, or you have a problem with the mapping part, any chapter, ancient, medieval, modern world, anywhere, mapping, any doubt you have, just do not think anything, go at Edubolt, book a session with me, my name is Dr. Jitendra Kumar, और वहाँ पे नाम डाल के बुक सेशन कीजिए जब भी मैं फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ, एंड आई वुड बी एबल टू डील विद यू, डिस्कस विद यू 1-to-1 इन योर प्रॉब्लम्स। सपोज कोई एक चैप्टर में प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम इन दी व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, प्रॉब्लम वेयर्स टू गेट नोट्स, प्रॉब्लम हाउ टू गेट फ्री PPT, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल चैप्टर्स। मान लो किसी चैप्टर टफ लग रहा है, उस पर मुझसे बात कर लो, टेक 1 घंटा टाइम, टेल मी द टॉपिक, आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल विद यू, and then your doubt will be resolved. Then book another appointment next time if you like it. So this is the way you will be able to prepare your history optional yourself with the self study with just a short guidance that you will get from my side, limited one. तो कुछ ही घंटों में आपको अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है सेल्फ में। अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया है एंड यू आर फाइंडिंग सम प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कैन ज्वाइन विद मी, वी विल बी discussing with you also. Okay, so I hope that you are able to understand that what is the syllabus, why should we prepare, which type of books should be dealt, ये सब important themes था। किसी और वीडियो में I will discuss in detail about the history optional, okay, on certain topic, on certain issues, इन सब पे कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा। मेरी कुछ मेरे नाम से आप यूट्यूब पे भी डालोगे तो बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएगी मेरे वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे, तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो एंड यू कैन बी watching those videos. And if you want me to make any videos, you can comment here and do not hesitate है ना in joining Edubolt. I will be there, I will be happily assisting you in all your doubts. Okay, so hope to see you soon at Edubolt. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our Edubolt YouTube channel. Thank you.